माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आपके क्लास में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, जुड़ गया है, वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप उसमें बहुत अच्छे से फुल मार्क्स ला भी सकते हो और बहुत ही समझना भी बहुत ही आसान है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, if I'm talking about it, then it is form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, close tables, etc. That means you will get many things. From that, you have to collect the information. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the fact in the best possible manner and to cover the information provided. The analytical paragraph has to be written in around 100 to 120 words. So the paragraph must use clear and crisp language along with providing complete details of the chart given in the question. There will be an internal choice given. That means you will get 2 in 2 out of 2. You have to write 1. Okay. Another thing that is very important for you, features of analytical paragraph writing. It describes the given chart, table, data, clues. Okay. Now, yes. Now it should be brief and comprehensive. Okay. And next is it should state facts that are provided by the chart. And it is necessary to make use of simple and accurate language. It should mention figure and quantities appropriately. It is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph. No personal observation or response should be provided. It is very clear. No personal and observation you have to mention. That means you have to go through the given data. Okay, information. It would be preferable to use the passive form of the verb. Okay. And if I'm talking about format of analytical paragraph, then first you have to go to know about introduction. That means first I have to explain introduction. Explain in 1 or 2 lines the subject of the graph given. Okay. Then if I'm talking about body part, that is middle part, then explain in detail what the graph is about. Use relevant figures, explain trends, make comparisons and contrast. Divide it into sub paragraphs. Also you can divide, that means you can make more than one paragraphs if required according to data. Okay. Now if I'm talking about conclusion, then conclude the paragraph giving the overview or summary of the graph. That means at last you have to write conclusion. Now the introduction, what have to start introduction if you are writing analytical paragraph. Now the introduction is the first paragraph that should describe in brief what the graph is about, and it should be like an opening paragraph that introduces the reader to the context of the chart given. When writing the introductory paragraph, you need not go into the detail. You just need to mention what is clearly evident from the chart or the graph given in the question. Okay, and it is the best to write the introduction in 1 or 2 lines. Okay, so that it will be completely about the graphs. So it is the best way to write 1 or 2 lines. The body of the graph. This part of the analytical paragraph should contain details of the graph chart given in the question. It should contain all the important information. It is extremely important to choose the significant details that should be included in the paragraph. The body can be broken into 2 or 3 subparagraph. I have told clearly that you have to write more than 1 paragraph, so it will be increasable for in words also, and it depending on the information extracted from the graph. That means if it totally depend on the graph. If graph having more detail, then obviously we will write in the different paragraph. Okay, and breaking the body into sub paragraphs make it easy for the reader to understand. Paragraph, this part of the analytical paragraph should contain detail of the graph chart given in the question. It should contain
all the important information. It is extremely important to choose the significant details that should be included in the paragraph. The body can be broken into 2 or 3 sub-paragraphs depending on the information extracted from the graph. I've told clearly that you have to write more than two. That means you can write 2 or 3 paragraphs. Okay, so it will be with good information, and some paragraph makes too easy for readers also to understand. So breaking the body into sub paragraphs. Okay, next, organizing information. You should look for the large differences that are very prominent, and you can mention the aspect which is the smallest or the largest in the data given. Any aspects that are similar should be mentioned. Next, you should further mention about the aspect that has remained unchanged or constant throughout. Now, comparing information. If the chart mentions two different parties, for example, men and women, refer to both of them in the analytical paragraph. If there is any contrast or comparison that could be drawn, you must present it effectively. If the chart is about a particular time period or highlights trends of several years, mention is here in a concise manner. And if any comparison or contrast can be done for 2 or more years, you should write about it too. Now, जो मैं बता रहा था आपको कि आप जब कभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जो बॉडी लिखते हैं, बॉडी में मैंने बताया कि 2 से ज्यादा आप पैराग्राफ लिखे और सब पैराग्राफ जो लिखते हैं, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका चार्ट कैसा है। चार्ट इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है वो किस पर डिपेंड करता है। यदि मैं बात करूं कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन का कि तुलनात्मक यदि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम करते हैं, देन आपको ये डिपेंड रहना पड़ेगा कि आपका जो चार्ट है तो उसमें किस तरह का नेम मेंशन किया गया है, कंट्री बेस पर या जेंडर बेस पर, जो भी है लैंग्वेज बेस पर, तो ये भी आपको रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से इसे एक इंफॉर्मेशन जो तैयार करते हो वो तैयार किस तरह से होना चाहिए, यानी कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नाउ, mentioning quantities when including numbers and figures, their accuracy must be ensured. That means आप जहां से डेटा लेते हो, जो इंफॉर्मेशन लेते हो, उसमें जो एक्यूरेसी होती है, जो नंबर एंड फिगर दिया गया है, इट शुड बी करेक्ट। एंड फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू द चार्ट ऑल्सो, यानी चार्ट में ऐसा ना कि आपने जो डेटा जहां से लिया उसमें कुछ और दिखा रहे हैं और आपने जो मेंशन किया वो डिफरेंट है। देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, इस तरह से बहुत सारी चीज आपको मिलेगा। और वहां से जो आप डेटा लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो नंबरिंग वे में लोगे, वो आपका परफेक्ट रहना चाहिए, यानी मिलता जुलता रहना चाहिए, दोनों से मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। करेक्टिंग सेंटेंसेस, इफ डिफरेंट information or ideas are there, you should use connectors or linked phrases to link them logically. The sentences of the paragraph should be sequential and connected rationally. Now, ये जो मैं बताया कि आपका कनेक्टिंग सेंटेंस होना चाहिए, यानी आप जो सेंटेंस बना रहे हो, जो सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, उसमें कनेक्टर्स यूज कीजिए। दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सीक्वेंस जो है अच्छा भी बनेगा और कई कई वर्ड्स को आप एक साथ जोड़ भी सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन आपका और भी बेहतर बन जाएगा। द कंक्लूजन, मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, उसके बाद बॉडी के बारे में बताया, उसके बाद अलग जो बॉडी में जो आप इंफॉर्मेशन डालते हो और कंपैरिजन करते हो या जो भी आप न्यूमेरिकल डेटा लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, या किस तरह होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कंक्लूजन का। द लास्ट पैराग्राफ शुड समराइज the idea mentioned and the information in general. It should be concluding in nature and act as the closing statement. One should keep in mind that one must not include any personal opinions. मैंने पहले ही बताया कि आप अपना पर्सनल ओपिनियंस नहीं देंगे और ऐसा सेंटेंस यूज नहीं करेंगे जो आपके मन में आता होगा, बिकॉज जो हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं वो आपका डिपेंड करता है टोटल जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है चार्ट का या तो डेटा जो दिया गया है, क्लूज जो भी मिला है उस पर। कंक्लूजन और द ऑब्जर्वेशन, यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स. You need not dispose of the information to write a good analytical paragraph.
The key is to choose wisely the important information, organize it well, state correct facts and summarize it properly. यानी आप जो कुछ भी उसमें समराइज करोगे, जो कंक्लूजन में डाल रहे हो, वो सारा का सारा करेक्ट फैक्ट होना चाहिए कि आपका न्यूमेरिकल से लेकर कोई भी डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए. सिंपली आई वांट टू से. ओके. नाउ यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ. किस तरह से आप बहुत अच्छे analytical paragraph को write कर सकते हो. For an introduction, I have told clearly, you can start with the following phrase: the chart given above describe, the table suggests, the line graph shows, and the data given provides information about, and the pie chart illustrates extra. Now, पहले तो मैंने बता दिया कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे करना है, तैयार करना है. अब जो यहाँ पर मैं बताया, एक इंट्रोडक्शन को किस तरह से आप तैयार करोगे. Now, for describing trends, use phrases and words like a pattern of growth, rapidly doubled, and skyrocketed, shrinking increase, picture showing rates declined, plummeted, leveled off, and stagnated, fluctuate, starting to rise, starting to fall, drop down slightly. यानी आप जो डेटा आपको मिला है उसमें इसके तुलना में आप देख सकते हो कंपेयर करके कि पहले वो राइज किया था, अप डाउन हो गया, उसका लेवल किस तरह से हुआ, उसमें किस तरह से बदला हुआ, किस तरह से वो फ्लक्चुएट किया, कैसे ज्यादा था, कैसे कम हो गया. फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज, यूज वेरियस स्टाइल लाइक परसेंटेज के, जैसे मैंने पहले ही बताया, 1/3 ऑफ, नियरली, अबाउट 1/4, एंड इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इक्वली और हाईएस्ट और लोएस्ट को भी इस तरह से आप क्लियरली बता सकते हो. अप्रोक्सीमेटली भी आप यूज कर सकते हो. इस तरह से परसेंटेज और को यूज करके आप डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हो. नाउ फॉर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट, यूज फ्रेज एंड वर्ड्स लाइक relationship between, similarly in contrast with the comparison to, but in the opposite case. However, whereas when it comes to, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो रिलेशन बना सकते हैं वर्ड्स को. और दूसरी बात मैं ये बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि आप इस तरह से कनेक्टर की तरह यूज भी कर सकते हो. ओके. सो स्ट्राइकिंग डिफरेंस एंड नोटिसेबल डिफरेंसेस, इस तरह से आप यूज करोगे पैराग्राफ, तो आपका पैराग्राफ बहुत ही अच्छा भी बनेगा और रीडर्स को बहुत इंटरेस्ट भी होगा और क्लियर कट होगा. Okay, for the conclusion and other connecting phrase, use overall, subsequently, in all, in a nutshell, for the chart given, in short, striking changes, including therefore extra. यहाँ पर जो मैंने जितनी भी सारी चीज दी आपको कनेक्टिंग फ्रेज में किस तरह से यूज करोगे, ये आपके सेंटेंस को और भी बेहतर बनाएगा, और जब कभी भी रीडर उसे रीड करते हैं तो वो भी और भी बेहतर बन जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा. और आपकी जो मार्किंग सिस्टम की बात करूं तो मार्क्स भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब कभी रीडर उससे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक समराइज वे में किस तरह से उन्हें एक तरह से सजाया गया है, किस तरह से उन्हें पैराग्राफिंग किया गया, पैराग्राफिंग के बाद कंक्लूजन भी कितना ही बेहतर बनाया, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी है. तो इस तरह से आपका एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग बहुत ही अच्छा बन सकता है. नाउ यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिया, एक एग्जांपल के लिए दिया, इस तरह से आप करेगा, ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके क्वेश्चंस में ये मिलेगा, यानी जो 2 क्वेश्चंस है उसमें से एक जो करना पड़ेगा आपको, इस तरह से बायोग्राफ बेस पर आपका मिल जाएगा. Now, then first you have to analysis. आप उसे analysis करेंगे. The charts of the division of household tasks for by gender in the Great Britain. Write an analytical paragraph describing the chart given in not more than 200. तो यहाँ पर आपका डिक्लेयर यहाँ बताए 200, आपका क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू दिस रहता है. तो आपका यहाँ पर जो बायोग्राफ शो कर रहा है, जो भी डिटेल दिया गया है, यह आपका बता रहा है, और यह चार्ट बेस पर जो चार्ट दिया गया है, इस पर आपको बोला जा रहा है कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करने के लिए. ओके. The chart shows the number of the minutes per day and spent a British man and woman in doing household tasks, and our average the men will spend about 4 hours. Okay, doing household tasks, whereas the men spend less than 2.5 hours. The tasks on which women spend more than men include cooking, cleaning, house. यहाँ पर मैंने देखा कि चार्ट में ऑलरेडी मैंने देखा, यदि आप फिर देखना चाहेंगे चलिए एक बार फिर देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए कुकिंग में कर रहे हैं, क्लीनिंग में करें, ये सबको आपको देखना पड़ेगा. ये सब आप देखिए, सारी की सारी चीजें को देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको जो मिला, यहाँ पर मेल, यहाँ पर मेल का भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर फीमेल का इन्फॉर्मेशन है. ये आपने जो दिया मिनट में दिया गया है, एंड डिवीजन ये आपका बताएगा कि ये चार्ट किस तरह का है. इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको बता रहा था कि यह आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है. ओके. Now, gardening, maintenance, odd jobs and house men spend the highest times almost 50 minutes. ये सब के सब इंफॉर्मेशन आपके पास है because on the base of chart. यानी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो एक एग्जांपल इस तरह से लिया हूँ कि आपके
और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। यानी आपको जो मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन बेस पर टोटल का टोटल एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करना है और उसमें इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी पार्ट रहेगी, कंक्लूजन रहेगी, और बॉडी में आप दो या दो से ज्यादा पैराग्राफ दीजिए और उस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन बेस रखिए और कंपेरेटिंग से लेकर के आप क्वांटिटी से लेकर के जो न्यूमेरिकल आपके पास इंफॉर्मेशन मिलता है उस सबको आपको मेंशन करना है। एंड लास्ट में मैंने बताया था कि कंक्लूजन को बहुत ही बेहतर बनाना है। तो यहाँ पर जो अभी जो है शॉर्ट में आपने सब चीज इंफॉर्मेशन को मेन और मेन जो अभी जस्ट मैंने आपको चार्ट दिखाया था एग्जांपल के लिए, इस पेज पर देखिए सारे स्पेंडिंग से लेकर के किस तरह से हाउस होल्ड अपना खर्च कर रहे हैं। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, देखिए यहाँ पर जो मैंने एक सेकंड फिर दिया हूँ आपको, ये भी आपके पास एग्जांपल के रूप में है, पाई चार्ट दिया, ये दिस इज पाई चार्ट। ओके, सो हियर इज गिवन द इंफॉर्मेशन, सबके सब इंफॉर्मेशन। बोलोगे कि आप ये कलर जो दिया गया किसका इंडिकेशन है, ये कलर आपका यहाँ इंडिकेशन दिया है कि ये कलर कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट कलर है, एंड डिफरेंट कलर आपका सिंबलाइज कर दिया, यहाँ पर नेम मेंशन है कि वो किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। देन फर्स्ट यू हैव टू गो टू राइट इंट्रोडक्शन, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी को कंप्लीट करेंगे, देन आपको कंक्लूजन बताना है। तो फर्स्ट you have taken that pie charts, many information given pie charts illustrates 7 different categories, okay, and households living in the poverty in the UK in 2002. It is clearly evident from the pie chart that 26% of the total poverty stricken households are those of it is clearly evident. Okay, so through the pie chart it is very clear, and just 9% to 12 24% whatever given, जो कुछ भी बताया गया तो वो क्लियरली बताया गया और उस तरह से आप डेटा क्या करते हो, जैसे कलेक्ट कर लेते हो, सारे इन्फॉर्मेशन बना लेते हो। नो, ओवरऑल 14% ऑफ द ऑल हाउस होल्ड से सभी के सभी मैंने पाई चार्ट का ही इन्फॉर्मेशन दिया गया, लिविंग अंडर द पॉवर्टी। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज दैन देयर एज counterparts, and couples without the children had better economic condition than those with children. ओके, तो इस तरह से जो मैंने आपको दो चार्ट दिया था, दो चार्ट बेस पर आपके पास पता चल जाता है कि आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करते हो, और वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या करता है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करने में हेल्प करता है। एंड इतना ही नहीं, आप अपने उस क्वेश्चन को सोल्व करके राइट करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन भी कर लेते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन तो प्राप्त कर लेते हो, मिल जाता है आपको, बहुत अच्छे प्राप्त मिल जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आप एक बार में ना समझते हैं बिल्कुल आप दो बार वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, यहाँ पर जो मैंने बताया कि द graph given shows estimate sales of the goods Dubai 2002, written in the analytical paragraph describing the line graph in around 150। ये तो आपका वर्ड्स का आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ओके, यहाँ पर ये जो आपका इन्फॉर्मेशन मिला ये आपका है मिलियंस ऑफ दिरहम्स। ओके, नाउ हियर इज मंथ जनवरी, जो भी मंथ है यहाँ पर आपका बता दें कि जनवरी में आपका 200 हुआ था, इस तरह से फरवरी का है, ये मार्च का है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये आपका डेटा आपने कर लिया। Now, the line graph depicts the estimated sales of gold in Dubai for a period of 12 months in 2002, millions of dirhams. Okay, so it is very clear about the, according to chart, you have to find out the information. Okay, and everything is given according to month, यानी आपके मंथ के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको डेटा मिलता है, उस मंथ के अकॉर्डिंग आप जाइए, एंड आप कंपेयरिंग भी कर सकते हो किसी किसी मंथ से कि कहाँ पर वो इंक्रीज हुआ था, कहाँ पर डिक्रीज हुआ था, और एवरेज भी निकाल सकते हो। और इतना ही नहीं, आप कभी 2 मंथ का भी कंपेयरिंग कर सकते हो, 2 मंथ में क्या हुआ था। ये टोटल डेटा बेस क्या करेगा, आपके एनालिटिकल राइटिंग को, पैराग्राफ को आपको और भी अच्छा बना सकता है। नो, overall the estimated gold sales fluctuated in 2002, ये total आपका information base है। Here we conclude the topic of analytical paragraph, as it is a new topic added to the syllabus of class 10th. Students need to prepare it well. Okay, so it is very clear at last, it is very clear. I have told in the starting also, this topic has been added in class 10th, so you all, my dear all, you can obtain good marks. Okay, so through this topic you all have to prepare so that you can get good marks. Thank you so much.